Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of March. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on daily basis. Do watch these videos. These videos are quite important for your competitive exams. In this video students, we will be talking about new criteria for MSME that will be coming into effect from 11 April 2025. Next thing, Ministry of Finance, they have launched BankNet eBCRE to enhance the PSU e-auctions asset sales, right? This was launched earlier also. We will be discussing this in detail now. Apart from this, SEBI, they have constituted a high-level committee that will review the conflict of interest of the top ranks. Then the public sector banks dividends increased 33% to 27,830 crore in FY24. There are many more new students in this video, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. So students, let's start with national affairs. See, first we are talking about is Ministry of MSME. Ministry of MSME has recently announced new criteria for MSMEs, right? Classification of the businesses under MSME will be classified in a different way now. These all classification will be coming into effect from 1st of April 2025. If we look at the criteria that has changed here is that earlier the micro enterprises, their investment limit was 1 crore rupees, which now has been increased to 2.5 crore rupees. Their turnover limit has increased from 5 crore to 10 crore rupees. Similarly, for small enterprise, their investment limit increased from 10 crore to 25 crore rupees and turnover has doubled from 50 crore rupees to 100 crore rupees. Similarly, for medium enterprise, the investment limit has been raised from 50 crore rupees to 125 crore rupees and the turnover has increased from 250 crore rupees to 500 crore rupees. What this will be impacting is this will provide easier access to loan with lower interest rate. Then priority in the government contracts will be reserved for MSMEs. Tax and duty exemptions will be provided and technology upgradation will be coming into play here. Next is Ministry of Finance. They have launched BankNet and eBCRE platform to enhance the PSU bank e-auction processes for the assets under stress. See, NPS, non-performing assets. These are the properties which will be sold here under using the e-auction process. See, basically an individual, say there is a person, he is having a property, right, a house, and he took loan against that property. Now he was not able to pay back that loan, so now this property will be with the bank, right? And now the bank will be able to sell this property through e-auction process here, that is your BankNet. This was launched in January 2025 and it is your bank asset auction network, right? So it will be able to it will help the bank to liquidate these non-performing assets. This will enhance transparency. It will provide better web and mobile infrastructure in mobile interface, and also here the consumers or the buyers will be able to easily toggle between the properties that they want to auction for. Next is SEBI. They have recently constituted a high-level committee that will review the conflict of the interest in the top positions, right? Here this committee will be looking into the matter related to the governance and revamp their rules on the conflicts of interest. This decision was taken by the Tuhin Kanta Pandey, who is the new chairperson of SEBI. This move will enhance the standard of transparency, accountability and ethical conduct of the members and the officials of the board.
Next is public sector banks dividend has increased 33% to 27,830 crore rupees in FY24. If we look at FY23, the dividends payout was close to 20,964 crore rupees, which are now has been increased to 27,830 crore. That is almost 33% increase in the dividend income. Next is NSDC. NSDC, that is your National Skill Development Corporation, and PayPal, that is a California, USA based fintech company. They signed an MOU, Memorandum of Understanding, where they will be providing skills to youth in the fintech sector. So skilling will be there, right? They will be provided with job opportunities to the candidates who are performing well during the skilling session. Soft skills, personality development training, right? They all will be provided here. Here NSDC, they will be providing all these things, all these skilling in various multiple districts that include your Chennai, Patna, Hyderabad, Surat, Indore, Bangalore, Karnataka, Ranchi, etc. Next is RBI. RBI's RRB get 5 more years to amortize the additional pension liabilities. I repeat, RBI, they have issued a directive regarding the RRBs, that is amortization of additional pension liabilities in the regional rural banks. As per the directive, these RRBs are now permitted to amortize the additional pension liability over 5 years starting 31st of March 2025 with a minimum of 20% expense annually. It applies to all the regional rural banks coming with effect from FY25, right? And here RRBs, they must implement the pension scheme respectively 1st of November 1993, which will increase their pension liabilities. Next is CIRL, that is your Centrico Insurance Repository Limited. This is a subsidiary of CDSL, and it has entered an agreement with Mumbai, Maharashtra based LIC to provide insurance repository services. This IR insurance repository system, it was introduced by the Indian regulators that will eliminate the paperwork by allowing the policyholders to hold and modify the policies digitally, right? And this collaboration is a part of LIC's request for proposal process that will aim to digitize the policy management, enabling policyholders to store insurance policies electronically and access seamless updates. Next is awards and recognition. Violinist R.K. Sri Ram Kumar has received 2025 Sangeeta Kalanidhi Award of the Music Academy. As you can see him in the picture here, right? He is violinist, Carnatic violinist R.K. Sri Ram Kumar. Correct? Take a note of this. And he was honored for his exceptional contribution to the Carnatic music. Also, his selection aligns with the 250th birth anniversary of Muthuswamy Dikshit in 2025. In addition to Sangeet Kalanidhi Award, correct? This award represents will be presented at the Music Academy events during the 99th annual conference and concert. Moving on, next is Sangeet Kalachar Award. This was also presented, but let me show you a list, students. First, Sangeet Kalanidhi Award to R.K. Sriram Kumar, then Sangeeta Kalachar Award to Shyamala, TTK Award to these individuals, then Musicologist Award to Professor C.H. Sridhar, Nritya Kalanidhi Award to Urmila ji, right? So these awards were also presented. Next is appointments and resignation. Dilma Vana Rousseff, she has been re-elected as the president of NDB, that is your National New Development Bank. I repeat, this is the former BRICS Development Bank, that is your new development bank, and she will be here till 2030. Take a note of this, students. Moving on, next is Ashok Singh Thakur. Ashok Singh Thakur has been elected as the chairman of INTACH, INTACH, that is your Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, and it has elected Ashok Singh Thakur as their new chairman for 3 years term during its annual general meeting held at its headquarters in New Delhi. The elections conducted for the post of chairman and governing council members followed due procedure with results declared post AGM. Right? Take a note of this. Ashok Singh Thakur. Moving on, next is Parminder Chopra has assumed the additional charge as the chairman and managing director of REC Limited, that is Rural Electrification Corporation Limited, and he will be in this position of the additional charge for 3 months until further orders. And she will be succeeding Vivek Kumar Devangan here. Right? Next is WFI, that is your Wrestling Federation of Indian President Sanjay Kumar Singh elected as a bureau member of UWW Asia,
right? Take a note of this. This is United World Wrestling Asia. This was through elections held during the United World Wrestling General Assembly in Jordan. And here Wrestling Federation of India president secured 22 votes out of the total 38 votes. Next is related to sports, students. Kabaddi World Cup 2025 was held here recently, and our country India has emerged victorious in both men's and women's Kabaddi World Cup 2025 held in United Kingdom. Take a note of this. If you remember, India hosted the Kho World Cup also, and in that too both men's and women's team were the winners here. Correct? So here also in Kabaddi World Cup, India has won the medal or first position in both men's and women's category. Next is Ashok Singh Thakur has been elected as the chairman of INTACH. We have done this. Next is Parminder Chopra. We saw this, CMD of REC Limited. Next is WFI President Sanjay Kumar Singh elected as the bureau member of United World Wrestling Asia. Next, Kabaddi World Cup. Here India has won the both in men's and women's category. Next is Indian gymnast Pranati Nayak has won the bronze in the vault final at the FIG World Cup 2025 held in Turkey. I repeat, Pranati Nayak, a 29-year-old Olympian, secured bronze medal in the vault final at the FIG World Cup held in Turkey. Next is important day, students. World Meteorological Day observed on 23rd of March. It is to raise awareness about the significance of understanding weather and climate patterns in tackling global challenges such as your climate change and extreme weather. The theme for this day is closing the early warning gap together. And first time this day was observed in 1961. Next is World Tuberculosis Day, that is your TB. This is a communicable disease that affects your lungs. This day is observed on 24th of March, and the theme for this day is yes, we can end TB, commit, invest, deliver. Moving on. Next, remember students, Telangana has won the National Award for Excellence in Tuberculosis Testing under the TB Mukt Bharat Abhiyan. So which state received the award here for the Best National Performance Award? It is your Telangana state. Moving on, next is your International Day for the right to the truth concerning gross human rights violation and for the dignity of victims, observed on 24th of March. Right, and this day is basically observed to create awareness about to honor the victims of serious human rights violations and advocating for their justice. Moving on, next is your International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade of 2025. This day is observed to honor the millions who suffered the transatlantic slave trade and has regarded as one of the most severe human violations in the history. There is a theme here: acknowledge the past, repair the present, and build a future of dignity and justice. Next, students, next we are talking about state news. Finance Minister of Tripura, Paranjeet Singh Roy, has presented the state budget worth 32,423 crore rupees for FY26. Here you can see he allocated 1,885 crore rupees for agriculture, 6,116 crore rupees for education, and 1,948 crore rupees for healthcare. Right? Take a note of this. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next is Odisha's Chief Minister Mohan Charan Manji launched the Bikasita Gaon Bikasita Odisha scheme, right, with a budget of 5,000 crore rupees over 5 years to support what? It was to support the rural development. Next, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has laid the foundation stone for North India's first 1 megawatt dash in Solan district of Himachal Pradesh. That is the 1 megawatt green hydrogen plant in the Solan district of Himachal Pradesh with an investment of 9.04 crore rupees. Next is Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin has recently inaugurated a 4.3 gigawatt solar cell and a module manufacturing facility of Tata Power Solar Systems Limited in the Tirunelveli district of Tamil Nadu. This facility has been established with an investment of 3,800 crore rupees, and this plant is expected to generate 4,000 job opportunities, with 80% of them being female. Next, Indian Army's Fort William in Kolkata was renamed to what? It was renamed to Vijay Durg to eliminate the colonial influences. Next, Karnataka Governor Tharchand Gehlot recently launched a Braille
enabled version of the Indian Constitution in Bengaluru, Karnataka to mark the 75th anniversary of the Constitution. Next, name the organization that recently unveiled the redefined and augmented research vehicle and thrust areas across DRDO Industry Academia Center of Excellence in New Delhi. Which is that organization? The organization is the Directorate of Futuristics Technology Management. This initiative will streamline and enhance the focus on the future technology needs in the directed research areas. Next, identify the Women Entrepreneurship Program that was launched by Union Minister of State Jayant Chaudhary in 9 colleges and universities across Assam, Meghalaya and Mizoram. It is Swalambini. Next, name the joint exercise recently conducted by the Indian Army and Indian Air Force focused on airborne operations to enhance the inter-service synergy in the eastern region of India. It is Winged Raider. This is the name of the joint exercise. And this exercise held between Indian Army and Indian Air Force. Next, in Feb, the Center for the Development of Advanced Computing under the Ministry of Electronics and Information Technology, they have signed a letter of intent with whom? It was with the Lego Group that will support the growth of the Indian electronic toy industry. Next, in which energy sector India achieved a historic milestone by exceeding 100 gigawatt capacity, reinforcing their leadership in renewable energy in Feb 2025. So this was in solar energy. We have achieved 100 gigawatt of target. Next, what is the harmonized system of nomenclature? This is an HSN code. This is given to any product that is traded in international market, and recently white rice was given this code. What is that code? It is 1006-3091. I'm sorry students, wait. Next, what is the normal procurement period for groundnut in Gujarat and Karnataka, which was recently extended by 6 days and 25 days respectively? So, what is the date normal procurement period? It was 90 days, which was extended by 6 days for groundnut in Gujarat and 25 days for groundnut in Karnataka. Next, where was the first ever Bay of Bengal initiative for multi-sectoral and economic cooperation, that is BIMSTEC Youth Summit, inaugurated by Union Minister Mansukh Mandaviya? So where was this inaugurated? In Gujarat. Next, identify the program that was launched during the 4th India-UK Energy Dialogue in Feb, co-chaired by Union Minister of Power Manohar Lal Khattar and Secretary for the Department of Energy Security and Net Zero, Ed Miliband of UK. So identify that program. Accelerating Smart Power and Renewable Energy in India. This is the program. Next, name the indigenous automated biomedical waste treatment plant that was launched by Union Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh at AIIMS, New Delhi. So name that indigenous automated bio-waste or biomedical waste treatment plant. It is Srijnam. Next, which mark is mandated for stainless steel seamless pipes and tubes according to Stainless Steel Pipes and Tubes Order 2025 issued by DPIIT? So which mark? It is your BSI mark that is compulsory for the stainless steel seamless pipes and tubes if they want to sell the products in the market. Next, how much amount has been allocated for the first phase of rehabilitating victims of 2024 Wayanad landslides in Kerala? Budget presented by the Kalanjur Narayan Panikar Balagopal in Feb 2025. So how much amount has been allocated? 720 crore rupees has been allocated for rehabilitation of the victims of the Wayanad slides in Kerala. Next, what is the budget amount presented by the Finance Minister of West Bengal, Chandrima Bhattacharya, in FY26? So budget is 3.89 lakh crore rupees. Next, which state has launched a revamped single window system at the Global Investors Meet to accelerate investment and ease of doing business? So which state? It is Karnataka state. Next, where was the Rural Technology Action Group Smart Village Center launched in Feb 25 with the aim of addressing rural technology needs and promoting innovation? It was launched in the state of Haryana. Next, name the initiative introduced by Madhya Pradesh as the first state in India to position itself as a hub for global innovation, technology and business collaboration. It is Global Capability Centers.
Next, identify the disease targeted for elimination by launching the annual nationwide mass drug administration campaign by Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda in FY25. So it is your lymphatic filariasis. Next, Department of Post has released a special commemorative souvenir sheet featuring 3 postage stamps dedicated to Mahakumbh Mela 2025, which is taking place in Prayagraj, UP from 13th of Jan to 26th of Jan. Who has designed the commemorative postage stamp? It was designed by Shankha Samantha. First question is identify the company that recently signed a memorandum of understanding with GRSE, that is Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, for 5 years to strengthen India defense and aerospace capabilities. It is Apollo Micro Systems. This collaboration will address the need of the present and the future need of the Indian defense forces. Next, who has been recently selected as the pilot for the Axiom 4 mission, becoming the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. So, Group Captain Subhanshu Shukla was appointed as the pilot for the Axiom 4 mission, and he became the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. And this Axiom space mission is of NASA. Next, mention the defense system that DRDO successfully conducted 3 consecutive flight trials from Integrated Test Range Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is very short range air defense system. These tests were conducted against high speed targets flying at a very low altitude. Next, the Indian Navy launched its 9th ammunition cum torpedo cum missile barge called Landing Ship Ammunition 23 at Suryadipta Projects Private Limited in Thane, Maharashtra. This ACTCM barge was designed and constructed by which organization? It was by MSME Shipyard in collaboration with the Indian Ship Designing Firm and Indian Shipping Registry or Indian Register of Shipping. Next, identify the navigation satellite that was launched by the Japan Aerospace Exploration Agency JAXA using their HC rocket from the TNSC in Japan. So, name that navigation satellite. It is Michibiki 6. Next, and one more thing, students, here remember, question can also be asked, this S3 rocket is of which organization? It is of Japan country, and the organization here is JAXA. Next is, during the 92nd USA spacewalk, which astronaut set the new record of a total spacewalk time by women? She is Sunita Williams, and she was recently brought back to from International Space Station to Earth, right? And along him, who was the other astronaut? Butch Wilmore. It was brought back by Crew 9 mission, and it was Dragon capsule that brought them back here. Next, identify the super application that was recently introduced by the Ministry of Railways to provide one-stop solution for Indian Railways services. It is Swarel. It is Swarel. Next, the latest version of the finite element analysis of structure, that is FEAST software, was launched by Dash at the 8th National Finite Element Developers Meeting at the IIT Hyderabad in Telangana. It is by ISRO, Indian Space Research Organization. Next is, how many MQ-9B Predator drones were procured from General Atomics USA as approved by the Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Narendra Modi for a strategic defense projects in Feb 2025. It is 31 MQ-9B Predator drones that were procured here. And this deal includes 16 Sky Guardians and 15 Sea Guardian variants. Next, name the rocket that was launched by the Russia from Plastek Cosmodrome to deploy military satellites into orbit. It is Soyuz 2.1V rocket. Next, United States Navy successfully tested the high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system, that is Helios system, using the Algerich Burke class guided missile destroyer. Question asked is, this Helios system was developed by whom? It was developed by Lockheed Martin Group. Next, in Feb, Spin launched, they developed an innovative method of Dash to launch satellites into the low Earth orbit without traditional rocket fuel. So in Feb, this Spin launch, this is a traditional method which is using the centrifugal force in order to rotate the satellites at a very high speed and then launch it into the space. So this is an innovative method developed by the electric powered kinetic launch mechanism. Next, identify the company that recently delivered their latest anti-tank 4 weapons to the Indian Armed Forces in February month. It is Saab AB. It is Sweden-based company.
Next, in Feb, the Shenzhou 19 crew on China's Tiangong space station successfully produced oxygen, right? And this was done through artificial photosynthesis. Quite an interesting and important question. So using artificial photosynthesis, oxygen and rocket fuel were produced at the Tiangong space station, that is the space station of China. Next is, which company successfully completed the 29th New Shepard flight in Feb, simulating lunar gravity for the first time? It is Blue Origin. Take a note of this, and this Blue Origin is of Jeff Bezos. Next, name the drone carrier warship that was commissioned by Iran for the first time into the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in the Persian Gulf. So, what is the name of the drone carrier? It is Shahid Bagheri. Shahid Bagheri. This is the name of the drone carrier, and it is of Iran. Next, identify the cryogenic engine that ISRO successfully carried out the ignition trial for the upper stage of launch vehicle Mark III in Feb 2025. It is CE-20. Take a note of it. And as per ISRO, the multi-element igniter within the engine has successfully simulated the engine ignition in the vacuum condition of space. Next, identify the organization that recently collaborated with the CNSA, that is China National Space Administration, to include Pakistan's first lunar rover in the China's Chang'e mission scheduled for 2028. So, which is that organization that collaborated with CNSA? It is the Space and Upper Atmosphere Research Commission of Pakistan. Next, which Indian institute collaborated with ISRO's Inertial System Unit to design and develop semiconductor chips, that is indigenous RISC-V controller for space application by the name IRIS, that is indigenous RISC-V controller for space application, and it was developed in Feb. Which is that IIT? It is Indian Institute of Madras. Next, in Feb, SpaceX Falcon 9 rocket launched a batch of 21 Starlink satellites. It was launched into the low Earth orbit, marking a significant step in expanding its satellite internet network. And in India, they are partnering with Airtel and Jio to provide internet services using the Starlink. Next, in Feb, Indo-Russian Rifles Private Limited, they have delivered 40,000 units of what? They delivered the 40,000 units of AK-203 assault rifles to the Indian Army, and these rifles will be delivered, or they will be manufactured at the Korwa Ordnance Factory, that is in Amethi in Uttar Pradesh. Next, which organization partnered with the Aeronautical Development Agency to develop high strength, high toughness, special grade steel, that is MDN 100 for aerospace applications? It is Mishra Dhatu Nigam Limited. Moving on, Indian ship design firm along with which organization designed and built the Indian Navy 8th missile cum ammunition barge launched on 14th of Feb in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, which is that Indian ship design firm? It is IRS, Indian Register of Shipping. Next, identify the organization that developed and tested India's 4th generation deep ocean submersible Matsya 6000 under the Samudriyan project in Feb 2025. It is National Institute of Ocean Technology, that is NIOT. Next, identify the spectrograph that was used by the scientists at the Physical Research Laboratory to discover the exoplanet. This is the exoplanet in Feb 2025. So, name that spectrograph. It is which spectrograph that was used here? So, it is your Advanced Radial Velocity All Sky Research 2 that was used to discover this exoplanet. Next, name the new communication satellite that was launched by China using the Long March 3B carrier rocket into geosynchronous transfer orbit to replace China Sat 10. So, name that communication satellite. It is China Sat 10R. So, China Sat 10R will be replacing China Sat 10. Next, which mission data was used to generate the first ever detailed geological map of the moon's south pole in Feb 2025? It is Chandrayaan 3. Take a note of this. First ever detailed geological map of the moon's south pole. Moving on, identify the missile that was jointly tested by DRDO and Indian Navy at the ITR Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is Naval Anti-Ship Missile Short Range. Next, name the lunar lander that was carried
Abroad, SpaceX Falcon 9 rocket at the third moon landing mission of 2025. Intuitive machines from NASA's Kennedy Space Center in USA. It is Athena. Take a note. Next, students, that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, students, is our homework section. Tell me recently, when do we observe the World Day of Glaciers? Second question, International Day of Forest. When do we observe this? Third question, UN French Language Day. When do we observe this? And how many official UN languages are there? Then fourth question, World Consumer Rights Day. When do we observe this? And tell me the theme also here of World Consumer Rights Day. Fifth question, recently, what was the rank of India in the Special Olympic Winter Games? And sixth question, recently Winter Games, one kind of a Winter Games was held in Ladakh recently. Can you tell me which edition of those games were held? What is the name of that game and the mascot also for that game? Right, so these are your 6 homework questions, friends. I want to see maximum participation from all the students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। इस वीडियो को ज़रूर देखा करो। हम स्टूडेंट्स वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एमएसएमई की। एमएसएमई की जो क्राइटेरिया होता है किसी भी बिजनेस को एमएसएमई कब बोलते हैं, वो चेंज कर दिया गया है अभी। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंक नेट, जो कि जनवरी में भी लॉन्च किया गया था, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि ई ऑक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है फॉर एसेट सेल्स। देन हम बात करेंगे सीबी के द्वारा भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, किस रीजन के लिए बनाई गई है। देन पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो डिविडेंड है वो 33% से बढ़ गया है। इसी के अलावा मैनी मोर न्यूज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी लर्निंग के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने अनाउंस किया नया क्राइटेरिया फॉर एमएसएमईज फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से नया क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। ये क्या कहता है नया क्राइटेरिया, कि अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की इंक्रीमेंट लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दी गई है। टर्नओवर लिमिट उसकी 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। वहीं पे स्मॉल एंटरप्राइज के लिए लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ से 25 करोड़ कर दी गई है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइज की लिमिट 50 करोड़ से 125 करोड़ कर दी गई है एंड जो टर्नओवर की लिमिट है 250 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अब इस चेंजेस से होगा क्या, जो लोन है वो इजीली मिल जाएगा लोअर इंटरेस्ट पे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगी गवर्नमेंट्स एमएसएमईज को। टैक्स बेनिफिट, ड्यूटी एग्जाम्पशंस रहेगी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती हुई हमें यहाँ पे दिखेगी एमएसएमईज की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया बैंक नेट एंड ईबीक्रे टू एनहेंस द पीएसयू बैंक ई ऑक्शन फॉर द एसेट सेल्स। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल है, उसके पास एक घर है, राइट। उसने घर के अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले लिया, लेकिन वो लोन पे नहीं कर पाया। तो ऐसे टाइम पे क्या करता है बैंक, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के अपना अमाउंट को रिकवर करता है, राइट। तो ये जो होती है प्रॉपर्टी, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ई ऑक्शन के प्रोसेस से सेल किया जाएगा थ्रू बैंक नेट। ये क्या है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर सेबी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई एक हाई लेवल कमेटी जो रिव्यू करेगी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एट द टॉप लेवल, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, राइट, बोर्ड मेंबर्स के बीच में, सीनियर ऑफिशियल्स के बीच में, उनको यहाँ पे कवर करने का, उनको यहाँ पे रिव्यू करने का ये काम करेगी। एंड ये डिसीजन लिया गया तुहिन कांटा पांडे जी की जो पहली सेबी मीटिंग हुई थी उसके अंडर। इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एंड एथिकल कंडक्ट फॉलो किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो डिविडेंड है वो 33% से हमें बढ़ता हुआ दिखा टू 27,830 करोड़ रुपए इन FY24। यहीं अगर हम FY23 की बात करें, ये कुछ 20,980 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ के अब 27,830 करोड़ रुपए हो गया। मतलब 33% का इंक्रीज मोटा मोटा हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड पेपल, जो कि कैलिफोर्निया एक USA बेस्ड फिनटेक कंपनी है। इनके बीच में MOU साइन हुआ ताकि जो CSR इनिशिएटिव्स है ना, उसके अंडर यहाँ पे स्किलिंग हम प्रोवाइड करा सकें यूथ को, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकें उस स्किलिंग के बेसिस पे। सबसे पहले तो देखो ये CSR प्रोग्राम क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये सोशल इशूज़ को भी टारगेट करें, सोशल इशूज़ के ऊपर भी काम करें, राइट। तो ये आपके CSR प्रोग्राम होता है। तो इसके अंदर स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी फिनटेक सेक्टर से रिलेटेड यूथ्स को, ताकि उनको एम्प्लॉयबल बना सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। इसी के अंडर आप देखेंगे कि NSDC कई सारे एरियाज़ में, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ चेन्नई में, बिहार में, पटना में, सूरत में, इंदौर में, बेंगलोर में, मुंबई में, रांची में भी ये स्किलिंग का काम कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अभी RBI ने RRBs क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स को भी 5 ईयर्स मोर दिए गए टू अमोर्टाइज द एडिशनल पेंशन लाइबिलिटीज, राइट, विद इन मिनिमम 20% एक्सपेंस एनुअली। करेक्ट, ये सभी RRBs पे लागू होगा फॉर FY25 एंड इसके लिए 31 मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट, एडिशनल पेंशन लाइबिलिटी ओवर द 5 ईयर्स। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं CIRL, सेंटेरिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। ये एक सब्सिडरी है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड CDSL की, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली LIC के साथ पार्टनर किया टू प्रोवाइड इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विसेज। अब ये इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विस क्या होता है, IR इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विस, ये बेसिकली आपका इंडियन रेगुलेटर्स के द्वारा लाया गया था ताकि जो पेपर वर्क है ना उसको एलिमिनेट किया जा सके, अलाउइंग पॉलिसी होल्डर्स की वो अपनी पॉलिसी को होल्ड एंड मॉडिफाई कर सकते हैं डिजिटली। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। कर्नाटिक वायलिनिस्ट RK श्री राम कुमार, इन्होंने रिसीव किया 2025 का संगीता कालानिधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक अकेडमी, राइट। इनका जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है कर्नाटक म्यूजिक में, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इनको संगीता कालानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट, चेन्नई तमिलनाडु में। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। म्यूजिक अकेडमी के लिए द्वारा दिया गया। म्यूजिक अकेडमी के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, N मुराली। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी के अलावा कुछ और अवार्ड्स दिए गए, जैसे आपका संगीता कालाचार्य अवार्ड श्यामाला को, संगीता कालानिधि हम देख ही चुके हैं। TTK अवार्ड आपके यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स को दिया गया। म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड प्रोफेसर CA श्रीधर को दिया गया। नृत्य कालानिधि अवार्ड उर्मिला जी को दिया गया एंड मैनी मोर्स यहाँ पे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। दिल्मा वाना रूसेफ, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको रिलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ NDB। NDB क्या है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये ब्रिक्स बैंक जो पहले होता था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, उसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, करेक्ट। तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया नया प्रेसिडेंट ऑफ NDB। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसके बाद अशोक सिंह ठाकुर, इनको इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ INTACH। ये क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज। इन्होंने इलेक्ट किया अशोक सिंह ठाकुर को एज अ चेयरमैन, 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। मूविंग ऑन, इसके बाद आ जाते हैं परमिंदर चोपड़ा, इन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड ये इनको सक्सीड करेंगी, विवेक कुमार देवांगन को ये सक्सीड करेंगी। एंड ये एडिशनल चार्ज इनको 3 महीने के लिए दिया गया है और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। इसके बाद आ जाते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय कुमार सिंह, इनको इलेक्ट किया गया एज अ ब्यूरो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का। इलेक्शन हुए थे, 38 में से 22 वोट्स इनको मिले एंड अब ये यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं एज द ब्यूरो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। कबड्डी वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला था। इंडिया ने बोथ मेंस एंड वीमेन कैटेगरी में यहाँ पे इस कबड्डी वर्ल्ड कप को जीत लिया है, यूके में हुआ था। अगर आपको याद हो तो खो खो वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था एंड यहाँ पे भी बोथ मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में इंडिया विजेता रही।
नेक्स्ट आ जाते हैं अशोक सिंह ठाकुर, हमने देखा चेयरमैन बने हैं अभी INTACH के। परमिंदर चोपड़ा एडिशनल चार्ज मिला इनको 3 महीने का। विवेक कुमार देवांगन उनको सक्सीड करेंगे एज द CMD ऑफ REC लिमिटेड। WFI के प्रेसिडेंट संजय कुमार सिंह को इलेक्ट किया गया ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का। इसके बाद स्पोर्ट्स देखा, कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने बोथ मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे जीत लिया है, UK में हुआ था फाइनल या फिर इवेंट। देन इंडियन जिमनास्ट प्रणति नायक, ये अभी ब्रॉन्ज मेडल जीती इन द वर्ल्ड फाइनल एट द FIG वर्ल्ड कप 2025 जो कि टर्की में हुआ था। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, तो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मीटियोलॉजिकल डे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है ताकि वेदर फिनोमिनास को, क्लाइमेट पैटर्न्स को यहाँ पे टैकल करने में या फिर उनको समझने में काम किया जा सके। एंड जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पे हम झेल सके, उनको स्टडी कर सके प्रॉपर तरीके से। इसकी थीम रहेगी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 1961 से ये डे हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, येस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। तेलंगाना वो बेस्ट स्टेट रही, राइट, इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर एक्सीलेंस इन ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग अंडर द TB मुक्त भारत अभियान। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। ये 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली कि जो राइट्स हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के, राइट, उनको फॉलो किया जा सके, उनके बारे में अवेयरनेस कराए जा सके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, 25 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया गया, राइट। एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ये एक बहुत सफरिंग ट्रेड था, राइट, एंड ये सफरिंग यहाँ पे हुई थी लोगों के द्वारा जो यहाँ पे गए थे, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिला था। हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पे गलत काम हुआ था, राइट, जो ट्रेड हुआ था लेबर्स का, स्लेव्स का, राइट। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर द प्रेजेंट, बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। इसके बाद बात करते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा प्रणजीत सिंघा रॉय, इन्होंने प्रेजेंट किया है बजट 32,423 करोड़ रुपए का, जिसमें से हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को 1885 करोड़ रुपए, एजुकेशन को 6,166 करोड़ रुपए एंड हेल्थ केयर को 1950 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में बेनिफिशियल रहेगा, देन हम होमवर्क सेक्शन पे चलेंगे। किनको अभी सेलेक्ट किया गया पायलट फॉर पायलटिंग एक्सियोम 4 मिशन, एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बने टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अ प्राइवेट मिशन। तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, मेंशन द डिफेंस सिस्टम जो कि DRDO के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट स्टाइल किए गए फ्रॉम ITR चांदीपुर ओडिशा। तो वो कौन सा एयर सिस्टम रहेगा? वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया इट्स 9th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार, जिसका नाम है लैंडिंग शिप एम्यूनेशन 23 एट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने महाराष्ट्र। ये जो ACTCM बार्ज है इसको डिज़ाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा? MSME शिपयार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेविगेशन सैटेलाइट जो कि लॉन्च की गई बाय JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यूजिंग द H3 रॉकेट फ्रॉम जापान। तो ये H3 रॉकेट भी जापान के JAXA का ही है, राइट। तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का, नेविगेशन सैटेलाइट का? वो है मिचिबिकी 6। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 92nd US स्पेस वॉक किस एस्ट्रोनॉट ने अभी एक रिकॉर्ड सेट किया ऑफ द टोटल स्पेस वॉक टाइम बाय अ वीमेन? तो ये है सुनीता विलियम्स, एंड ये 9 मंथ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थी अलॉन्ग विद बुच विल्मोर। इनको वापस लाने के लिए जो मिशन यूज़ किया गया वो है क्रू 9 मिशन। SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल को यूज़ किया गया था इनको वापस लाने के लिए, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सुपर एप्लीकेशन जिसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो भी इंडियन रेलवेज की सर्विसेज हैं वो यहाँ से एक्सेस की जा सके। तो क्या नाम रहेगा इस एप्लीकेशन का? वो है स्वारेल। नेक्स्ट, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर फीस सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 8वें नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग के द्वारा एट IIT हैदराबाद इन तेलंगाना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को भी प्रोक्योर किया गया जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी फ्रॉम
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी। तो कितने MQ-9B ड्रोन्स को प्रोक्योर किया गया फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स? तो वो है 31 ड्रोन्स को यहाँ प्रोक्योर किया गया, राइट। 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे, 15 आपके सी गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे। नेक्स्ट, उस रॉकेट का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय रशिया फ्रॉम प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम टू डिप्लॉय मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो वो है सोयूज 2.1V रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हाई एनर्जी लेजर इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्वेलेंस सिस्टम हीलियोस को। करेक्ट। पूछा जा रहा है ये जो हीलियो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट, इन फेब स्पिन लॉन्च, ये इन्होंने डेवलप किया एक इनोवेटिव मेथड टू लॉन्च द सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। जैसे क्या है बेसिकली यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट्स को रिवॉल्व किया जाएगा एंड सडनली यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पावर्ड काइनेटिक लॉन्च मैकेनिज्म है जिससे इसको काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इसको एकदम काफ़ी स्पीड में रोटेट करके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा एंड फर्दर ऊपर जाके एक पॉइंट पे ये अपनी इंजन को फ्यूल को ऑन करेगा। काफ़ी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे टू लॉन्च द सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया अपना लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब 2025। तो यह है साब AB। नेक्स्ट, इन फेब शेंजू 19 क्रू ऑन चाइनाज टियांगोंग स्पेस स्टेशन सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे डेवलप किया गया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से। एंड हम जानते हैं ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? ये चाइना का है एंड शेंजू के 19 के क्रू ने ये किया, तो ऑक्सीजन को यहाँ प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट को स्टिमुलेटिंग द लूनर ग्रेविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है ब्लू ओरिजिन। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस ड्रोन कैरियर वॉरशिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया बाय ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ऑन द पर्शियन गल्फ। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है शाहिद बघेरी। ये है वो ड्रोन कैरियर वॉरशिप। नेक्स्ट, उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम बताओ दैट इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द इग्निशन ट्रायल उसके अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इन फेब 2025। तो क्या नाम रहेगा उसका? CE-20। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने कोलैबोरेट किया CNSA के साथ ताकि पाकिस्तान की पहली लूनर रोवर को भेजा जा सके इन द चेंगईज 8 मिशन जो कि 2028 में लॉन्च किया गया। तो पाकिस्तान की ये रिसर्च या फिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी रहेगी, राइट। तो ये है द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने अभी कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन किया जा सके जिसका नाम है आयरिस। ये आप उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा IIT है? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, अभी फैल्कन 9 स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया बैच ऑफ 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एक्सपेंडिंग द सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। और स्टारलिंक ने ही इंडिया में एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया है ताकि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। एंड बेसिक अफोर्डेबल तो नहीं होगा कहने की बात है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी इंडियन आर्मी को। ये जो राइफल्स हैं ये कहाँ बनाई जा रही हैं? ये बनाई जा रही हैं कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री में। ये कहाँ पर है? ये है अमेठी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन? तो वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिज़ाइन किया एंड बिल्ड किया इंडियन नेवी का 8वां मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था? तो यह है नेशनल, इसका आंसर होगा इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। इन्होंने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है इस MCA बार्ज को। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया एंड टेस्ट किया 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट इन फेब 2025। तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रोग्राफ जिसको यूज़ किया गया बाय साइंटिस्ट एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी टू डिस्कवर द एक्सोप्लैनेट। ये वो एक्सोप्लैनेट रहेगा। तो क्या वो स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्नोलॉजी है? वो है एडवांस रेडियल वेलोसिटी ऑल स्काई सर्च 2।
नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा थ्रू लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ताकि रिप्लेस किया जा सके चाइना सेट 10 को। तो चाइना सेट 10 को रिप्लेस करेगा चाइना सेट 10R। नेक्स्ट, किस मिशन डाटा को अभी यूज किया गया टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स साउथ पोल? तो चंद्रयान 3 इंडिया का मिशन है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके डाटा को यूज किया गया ताकि एक जियोलॉजिकल मैप, काफी डिटेल जियोलॉजिकल मैप को डेवलप किया जा सके ऑफ द मून्स साउथ पोल। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया वाटरशेड यात्रा, जो कि लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ये इस कैंपेन के अंदर 1 मूवमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे 60 से 90 दिन के लिए अक्रॉस 805 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओडिशा की चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा विकसित गांव विकसिता ओडिशा ये स्कीम लॉन्च की गई विद एन आउटले ऑफ 5000 करोड़ रुपीस। 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसका एम रहेगा रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट का डैश सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 1 मेगावाट का सोलर 1 मेगावाट का आपका नॉट सोलर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रहेगा, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहेगा इन हिमाचल प्रदेश। 9.04 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 4.34 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किसकी? ये रहेगी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी के फोर्ट विलियम इन कोलकाता, इसको रीनेम किया गया टू विजय दुर्ग। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नर थारचंद गहलोत जी, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेंगलुरु कर्नाटका में टू कमेमोरेट और टू मार्क द 75 ईयर एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली अनवेल किया एक रीडिफाइंड एंड ऑगमेंटेड रिसर्च वर्टिकल एंड थ्रस्ट एरिया अक्रॉस DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंपली बोले तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी लॉन्च किया गया? तो वो है डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जहाँ पे फ्यूचर के ऊपर टेक्नोलॉजीज, कटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो वो क्या है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? वो है स्वावलंबिनी। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट की गई इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिनका फोकस रहेगा एयरबॉर्न ऑपरेशंस का टू एनहेंस द इंटर एनर्जी सिनर्जी एंड इन द ईस्टर्न रीजन। तो उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ? लीगो ग्रुप के साथ, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक टॉय इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, रीइंफोर्सिंग इट्स लीडरशिप इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन Feb 2025। तो ये रहेगा सोलर एनर्जी में। किस एनर्जी सेक्टर में? सोलर एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट, अभी HSN कोड दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वाइट राइस का यहाँ पे जो कोड मिला है वो क्या है? HSN कोड, वो है 10063091। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पीरियड ग्राउंड नट का इन गुजरात एंड कर्नाटका, जिसको अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया 6 एंड 25 दिन से। तो पहले 90 दिन का प्रोक्योरमेंट पीरियड होता था, तो ये गुजरात में ग्राउंड नट का 6 दिनों से बढ़ा दिया गया है एंड कर्नाटका स्टेट में इसी को 25 दिनों से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यूथ समिट इनॉग्रेट की गई मनसुख मांडविया जी के द्वारा। तो गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करो जो कि लॉन्च किया गया 4th इंडिया UK एनर्जी डायलॉग के दौरान। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इसका फेज 2 यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान का नाम बताओ जो कि अभी लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एट एम्स दिल्ली। तो ये है सृजनम। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स को अगर हमें मार्केट में बेचना है तो DPIIT के द्वारा बोला गया कि इनके ऊपर BIS मार्क होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ रिहेबिलिटेटिंग विक्टिम्स ऑफ 2024 वायनाड लैंडस्लाइड्स इन केरला, बजट प्रेजेंटेड बाय द
कलंजूर नारायण पेनिकर बाला गोपाल इन फेब। तो कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है पहली फेज के लिए, तो 750 करोड़ रुपया पे अलोकेट किए गए हैं पहले फेज के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल चंद्रिमा भट्टाचार्य इन FY26। तो 3.89 लाख करोड़ रुपीस का ये बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड सिंगल विंडो सिस्टम एट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, कर्नाटका के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च इन फैब विद द एम ऑफ एड्रेसिंग रूरल टेक्नोलॉजी नीड्स एंड प्रमोटिंग इनोवेशन। तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर उस इनिशिएटिव का नाम बताओ इंट्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश एज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ हब ऑफ ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कोलैबोरेशन। तो वो कौन सा ग्लोबल हब रहेगा, वो है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये मध्य प्रदेश के द्वारा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजीज़ का नाम बताओ जिसके टारगेट किया गया टू एलिमिनेट बाय लॉन्चिंग एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन बाय JP नड्डा जी। तो लिम्फेटिक फ्लेरोसिस को एलिमिनेट करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। इसके बाद आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल कमेमोरेटिव सूवरेनियर लॉन्च किया फीचरिंग 3 पोस्टेज स्टैम्प डेडिकेटेड टू महाकुंभ मेला विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रयाग यूपी फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी। पूछा जा रहा है हु डेजिग्नेटेड और हु डिजाइन दिस कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। तो शंखा समंता के द्वारा ये पोस्टेज स्टैम्प को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कमेमोरेटिव कॉइन की वैल्यू बताओ जो कि इशू की गई टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद राफ़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कमेमोरेटिव कॉइन को इशू किया गया। तो 100 रुपीज़ का ये कमेमोरेटिव कॉइन रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आर होमवर्क सेक्शन। टेल मी रिसेंटली व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स। सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व दिस। थर्ड क्वेश्चन, UN French language day, when do we observe this, and how many official UN languages are there. Then fourth question, World Consumer Rights Day, when do we observe this, and tell me the theme also here of World Consumer Rights Day. Fifth question, recently what was the rank of India in the Special Olympic Winter Games. And sixth question, recently Winter Games, one kind of a Winter Games was held in Ladakh recently. Can you tell me which edition of those games were held, what is the name of that game and the mascot also for that game, right? So these are your 6 homework questions, friends. I want to see maximum participation from all the students.